I asked chatgpt to decide 3 places for me to go on a Sunday. Too smart for the world tonight, yeah. Too smart for the world tonight. Too smart for the world tonight, yeah. It's been easy for me to see my life in strictly tunnel vision. I overthink too much, can't give it up and turn to my addictions. Clouds in the sky follow me back to my apartment, make me bitter. And I spend too much time alone, shut people out, said I would call, I didn't. But when you come around, got me outside in the sunlight, changing my worldview. When I'm high off the ground, you can talk me down to real life. How did I find you? When I'm too smart for the world and for the world and Okay, I think I'm working on my social anxiety and recording in public. I've been trying to record in the auto, and yeah, I mean, there are people passing by. Yeah. So I'm trying to come over my social anxiety, and I'm trying to now record in the auto and in public places. But of course, मैं एकदम से कैमरा पूरा सीधा नहीं पकड़ने वाली because it still makes me anxious. But what I've realized so far is that yeah, there was a mom with 4 kids जो अपने बच्चों के साथ आई हैं. So okay, I start from the beginning. I asked ChatGPT to decide 3 places for me to go on a Sunday. I'll tell you why first, because I haven't made a lot of friends. I have made no friends so far in 1 month of living in Bangalore, and I couldn't ask anyone about where to go in Bangalore. So the best part was that I could ask AI because technology में सिर्फ type करना है तुम्हें. So या मैंने सोचा फिर लाइक अगर मैं कभी भी पिछले 2 वीकेंड से मैं घर पे थी, मैंने कुछ भी नहीं किया. सो मैंने सोचा इफ़ आई डोंट गो आउट दिस संडे देन आई विल नॉट गो आउट एट ऑल. तो मैंने फाइनली ChatGPT से पूछा, और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इंसर्ट करके दिखाऊंगी कि क्या 3 ऑप्शंस मुझे मिले. सो आई एम at my first location, which was the first option, and then I'll go to the other 2 options. Now, why I chose 3 things to do in a day instead of doing those 3 things throughout the week or on 2 days, which is like Saturday, Sunday, is because I'm a lazy person and I know I won't go out at all. एक बार मैं चले गया तो चले गया, उसके बाद मुझे पुश चाहिए होता है. For another 2-3 weeks I hibernate and isolate and then I go out again. Tell me if you relate. But हाँ, तो मैंने सोचा 3 जगह एक दिन में कवर कर लेते हैं. Because of this reason I'm going to now go to the other place and then the third place after that. can't close my eyes. Too dark in my head to fly, but you shine a light. I see the sky, and when things just won't go right, you turn the stars on in my mind. My most favorite part about coming to this park is that I'm able to see so many different experiences. The first one was this beautiful group of women performing a traditional dance. Then I saw a few couples just spending time, laying a mat and spending time with each other. It was so beautiful. I just love to see कैसे लोग प्यार में होते हैं और कितने खुश होते हैं. I mean the pure feelings that show through how they spend time together, even in just a regular park. I mean, of course, this is not a regular park, it's a beautiful park. But it's just nice to see different experiences. I saw kids crying, moms clicking pictures of their kids, old couples walking, holding hands, friends meeting each other and sharing a lunch. This makes me
restore faith in just humanity. ये सब देख के ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया में अभी भी लोग फ़ोन्स के बाहर जी रहे हैं और नफ़रत के साथ प्यार भी एग्जिस्ट करता है. लाइक ऑल इमोशंस एग्जिस्ट. There's love, there's hatred, there's sadness, there's happiness. And I think in places like these, so that was an uncle staring at me, yeah. When I'm too small for the world and I, for the world and I, for the world and I. Too small for the world to live. 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 I wish that I could fake my smile as well as everyone pretending. They play the part so well, but I can tell the party's never ending. You take my hand and suddenly I'm somewhere brighter than I started. Oh, and maybe it's different now. You show me how not everybody's In plate 120. heartless. When I'm too small for the world and I, for the world and I can't close my eyes. Too dark in my head to fly, but you shine a light. I see the sky. So out of the 3 places that I decided to visit, number 1 the chatgpt suggested was Kaban Park. Number 2 was the Bangalore Palace. Bangalore Palace का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं था अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी. थोड़ा बहुत मैंने लिया बट ज़्यादा अलाउड नहीं था एंड आई वांटेड टू रिस्पेक्ट इट, सो आई डिडंट शूट मच. द थर्ड लोकेशन वाज कमर्शियल स्ट्रीट. टेक्निकली कमर्शियल स्ट्रीट जाने की बजाय बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग ही करनी थी एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट like I know I had to do what chatgpt suggested, but technically commercial street जाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा तगड़ा रीज़न नहीं था बिकॉज मुझे शॉपिंग नहीं करनी और ऑनेस्टली मुझे बहुत आलस आ गया था. तो आई chose to meet a friend around commercial street for chai, and उसके बाद I'm meeting another friend not in commercial street but in कोरमंगला, अराउंड कोरमंगला. आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर मीटिंग बट द पॉइंट इज कि मैं तीसरी जगह वहाँ डिलीट कर दिया है. आई डिड गो टू कमर्शियल स्ट्रीट बट आई डिड नॉट शॉप देयर विच इज़ वॉट chatgpt suggested, and this is how life is. You can plan and make plans and then you can change them according to how you like it, because that's what life is about. You do what feels right in the moment and not what you already decided for the rest of your life. That's how I like to live. And yeah, now I'm going to meet the other friend. और मैं ये थर्ड पार्ट शूट करने के बाद ब्लॉग बंद कर दूँगी, बट the overall context of the video is that I like to stay in one place and I like to be in my comfort zone, so I don't go out on weekends or meet a lot of friends. That's just me personally. मैं नहीं कहती कि तुम लोग को सबको वीकेंड्स पे घर पे रहना चाहिए. पर्सनली मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं पसंद, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से घूमती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ. इसीलिए मैं 3 हफ्ते कुछ नहीं किया और फिर मैंने 1 दिन में 3 जगह घूम ली. मेरा ओवरऑल बजट ट्रैवल के अंदर लगा है मोस्टली, बट दैट इज़ ऑल्सो अंडर 1000 रुपीज़. बट एंड दैट्स वाई आई एम एबल टू स्पेंड 1000 in one day because I did not spend anything in the last 2 weeks. That's how I like to save up, and that's how I save most of the money and my expenses. Because like I mentioned in the channel and in all my videos also, I'm very very extremist by nature, so I do things in extreme. या तो बिल्कुल नहीं घूमना या बहुत ज़्यादा घूमना है. Do what works for you. Let chatgpt or any other person in your life or just yourself decide a plan what you want to do and eventually go with it and change it if you don't like it. Okay, I forgot to mention that to visit the Bangalore Palace, the charges are about 240 rupees per person, so make sure that you're carrying cash or card to visit Bangalore Palace because वहाँ पे UPI अलाउड नहीं है. एंड उसके अलावा और कुछ मुझे मेंशन करना है. हाँ, सो ओवरऑल लाइक माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन
in the auto throughout the day, visiting 3 different places. Have costed around I think 600 and 2 plus 240 for the entry for Bangalore Palace. So almost 600 850 के आसपास. एंड नाउ आई मीन ऑफ कोर्स उसके साथ मैंने चाय पी और थोड़ा बहुत इधर उधर खाया. 100-200 रुपये वहाँ पे भी लग गए हैं. उसके अलावा ज़्यादा आई डोंट थिंक मेरा खर्चा हुआ है. हाँ, 1000 रुपये से कम नहीं हुआ है. When things just won't go right, you turn the stars on in my mind. When I'm too small for the world and I for the world. फ्रस्ट्रेटेड इंसान. क्या हाल है? क्यों? नहीं मेरे को यू टू इट इज समथिंग आई एम नॉट ओपन टू. बिकॉज यूर टू टू व्हाट? क्या बोलते हैं? ये सुन योर ब्लॉग इज स्टार्टिंग माय पेनल्टी अब इंग्लिश में अब इंग्लिश में बोलेगा. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश. लिटरली 10 सेकंड पहले हिंदी में बात कर रहा है. क्या कहता भाई देख दिस पर्सन हु इज लाइंग टू ऑल ऑफ अस इन कैमरा. भाई फेक. ये क्या है? पता नहीं. इट्स नॉट अ पार्क कहते हैं इसे. पार्क. पार्क से मुझे कुछ और याद आ गया. क्या यार ये देखियो. वाओ यार ऐसे घर तो बहुत है गुड़गांव में भी. ये तो नए बिल्डर वाले घर है. इज दैट सपोज्ड टू मेक मी फील बैड दैट आई डोंट लिव इन गुड़गांव? आई मीन गुड़गांव गाजियाबाद सेम थिंग. गाजियाबाद में कहाँ रहते हो? मैं कभी नहीं गई गाजियाबाद. मुझे नहीं पता तो कहाँ रहता है. You take your time with me, show me patience. When I'm too small, you're my inspiration. You zoom me out, help me take my time. You turn the stars on inside. Sometimes, even if you know how something's going to end, that doesn't mean you can't enjoy the ride. The great moments of your life won't necessarily be the things you do. They'll also be the things that happen to you.